square of coefficient of correlation. if 41 if the इसके पहले सारे थियोरी है तो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं. 41 से प्रैक्टिकल्स है तो हम लोग वो करेंगे. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9 then the coefficient of determination is. Now if r is coefficient of correlation, r square is coefficient of determination, तो ये होगा आपका coefficient of determination. If the coefficient of correlation between two variables is 0.7, then percentage of variation unaccounted for. Okay, this percentage of variation unaccounted for actually means, this means coefficient of non-determination. So if r is correlation coefficient, then r square is coefficient of determination. 1 minus r square is coefficient of non-determination. तो अगर r 0.7 है तो r square होगा 0.49 और coefficient of non-determination will be 1 minus 0.49, that is 0.51. उन्होंने परसेंटेज पूछा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 51% आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी. अभी हम लोगों ने लिख के भी ली है, इसको मैं वापस एक बार रिवाइज कर देती हूँ. इफ r is correlation coefficient, then r square is coefficient of determination. 1 minus r square is coefficient of non-determination. या इसको बोलते हैं unknown variance. Non-determination is also called as variance, variation unaccounted for, or unknown variance. Determination को बोलेंगे वो लोग known variance. Known variance or variation accounted for. Coefficient of non-determination is unknown variance or variation not accounted or unaccounted. Getting this? Then next, set B. क्या होता है, हम लोग जब प्रैक्टिकल सम्स करते हैं ना तो उसके साथ साथ थियोरी भी हो जाती है. If for two variable x and y, the covariance variance of x and y are given, what is the value of correlation? Okay, so what have they given? They have given you covariance. Covariance क्या है? 40. Variance of x is 16. So variance of x is 16. The standard deviation of x will be 4. Variance of y is 256. तो standard deviation of y क्या होगा? 16. So आपका r का वैल्यू क्या है? Covariance of xy upon variance of x into variance of y. 40 upon 4 into 16. .625. So that is your answer, B. हमारा फॉर्मूला क्या है r का? Covariance of x and y upon standard deviation of x. Standard deviation is under root of variance. Positive under root of variance. Standard deviation of x upon standard deviation of y. So standard deviation of x is positive under root of variance of x.
and standard deviation of y is positive under root of variance of y. If covariance xy is 15, what restriction should be put for the standard deviation of x and y? Now see, this is your formula. अगर r की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही होनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होनी चाहिए. अब r का क्या है? कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. इसका अगर r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन of x and y should be greater than or equal to covariance. So product of standard deviation of x and y should be greater than or equal to covariance. अगर ये 15 है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, क्योंकि अगर वो लेस देन 15 होगा तो आपके r की जो वैल्यू है वो 1 या -1 से बड़ी होगी. तो आपका क्या है? तो नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि लेस देन 15 अगर होगा ना तो चलेगा ही नहीं. सम का तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड नहीं कर रहे. 15 से कम होगा तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और आपकी r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. तो योर B इज योर आंसर. If covariance between two variables is 20 and the variance of one variable is 16, what would be the variance of other variable? Now again the same thing. Covariance अगर 20 है और एक वेरिएबल का वरायंस अगर 16 है, वरायंस है ना 16. तो वो उसका अगर वरायंस 16 है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? 4. अब 4 into standard deviation of other variable should be greater than or equal to 20. So standard deviation of other variable should be greater than or equal to 5. ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 या 5 से बड़ा होगा अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी वरायंस देखेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वरायंस should be greater than or equal to 25. If this is the case, only then your r will be in the same value. तो more than 10, more than less than 10 तो नहीं होगा, more than 1.5 इसको नहीं बोलेंगे हम लोग. I think there is some mistake in this more alternatives. It has to be 25 or more than 25. वो ऑप्शन उन्होंने इधर दिया ही नहीं है. तो more than 10 हम लोग मार्क कर सकते हैं. एक्चुअली more than 10 भी नहीं, more than 25 ही होना चाहिए. मैम हमारी बुक में है 25 का ऑप्शन. हाँ, तो ये मेरा फिर पुराना मॉड्यूल है तो इसलिए उसमें नहीं है. तो आपका कौन सा ऑप्शन है मोर देन 25? ए वाला. ओके, तो ये अगर, क्योंकि ये पुरानी बुक है ना मेरी, पुराने मॉड्यूल में नहीं था, ये मोर देन 25 ही होना चाहिए. Now fourth one, if y is equals to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? ये मैंने आपको लिख के भी दिया था. I'll again explain this part. If y is equals to a plus bx, then if b is positive, then correlation between x and y is +1. If b is negative, then rxy is -1.
अब उन्होंने क्या दिया है, if y is equals to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है. Actually it can be 1 or -1 according as b is greater than 0 or b is less than 0. b is greater than 0 is positive, so it will be +1, or b is less than 0, it will negative, it will become -1. C is your option. If r is 0.6, then coefficient of non-determination is, अगर r 0.6 है तो coefficient of determination क्या होगा, r square, that is 0.36. 1 minus 0.36 क्या हो जाएगा, 0.64. अब ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. If u plus 5x is equals to 6 and 3y minus 7v is equals to 20, the correlation between xy is 0.58, then what would be the correlation between u and v? ये भी मैंने आपको इसके रूल्स दिए थे कि if u is equals to a plus bx and v is equals to c plus dy, then rxy is equals to ruv when b and d have same signs, and rxy minus rxy is equals to uv when b and d have different signs. So let us see what is the relation now. U plus 5x is equals to 6. U plus 5x is equals to 6 and 3y minus 7v is equals to, I think it is 20, is equals to 20. So this will be u is equals to minus 5x plus 6. 7v is equals to 3y minus 20. So v is equals to 3 by 7y minus 20 by 7. Now see here, b is minus 5 and d is 3 by 7. कैसे पहचानेंगे b क्या है? x का कोएफिशिएंट b हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट d हो जाएगा. अब इन दोनों की साइन तो अलग अलग है, तो ruv is equals to minus rxy. rxy क्या है? 0.58. ruv क्या हो गया? minus 0.58. B is your answer. बहुत टिपिकल सम्स है ये, आते ही आते हैं एग्जाम में. Then this is also very important. These are all correlation wale sums. If the correlation between x and u is 3x plus 4u plus 7 is equals to 0, and correlation coefficient between x and y is given as minus 0.6, then what is the correlation between u and y? Correlation between u and y is correlation between x and y into correlation between u and x. ये तो इन्होंने दे दिया minus 0.6, लेकिन ये कैसे निकालेंगे? ये इसके ऊपर से निकालेंगे. उन्होंने दिया है 3x plus 4u plus 7 is equals to 0. I can say 4u is minus 3x minus 7. क्योंकि ये x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, u is equals to minus 3 by 4x minus 7. ये क्योंकि निगेटिव है तो rux भी -1 है. So this will be multiplied by -1 and your answer will be 0.6. C is your answer. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी है ऑलरेडी. If u is equals to ax plus b and rxy is given to you, then correlation between u and y will be rxy into rux. rux कैसे डिटरमाइन होगा? a के वैल्यू पे. If a is positive, then rux will become +1. If a is negative, then rux will become -1.
तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया +0.6. And this is very interesting. From the following data x and y, two coefficient of correlation was found to be 0.93. What is the correlation between u and v given this? अब इसका तो correlation coefficient 0.3 है, ये values उन्होंने आपको दी है. You can easily find out the correlation coefficient. पहले आप ये uv का correlation coefficient find करोगे and then I'll tell you the shortcut method. अब मैं shortcut. If you find out correlation between uv, you will get it is as 0.93. अब ये बिना solve किए भी आप कर सकते थे. See, watch x and watch u. And if you watch them very carefully, you will get a relation between x and u. ये 5 की जगह पे 0 आ गया तो शायद 5 - 5 क्या है. और देखो 2 - 5 - 3 -2 0 -1 2. तो u is nothing but x - 5. And v is nothing but y - 8. क्योंकि 8 की जगह पे 0 आ गया है. और 4 - 8 -4 -2 -1 2. Yes. And correlation, this is change in origin. This is change in origin. What do you mean by change in origin? A constant is subtracted from all values. Constant is added or subtracted from all values. And correlation is not affected by change in origin. We have written this in properties of correlation that correlation is unaffected by change in origin. That is when you add or subtract a constant to the all the values of the data. So R was 0.93, R will remain 0.93 because it is unaffected. ये उसका shortcut था. Referring to data in question number 8, what would be correlation between U and V? Now see the data here. 2 की जगह पे 10 आ गया, 3 की जगह पे 15, 5 की जगह पे 25, 4 की जगह पे 20, y की जगह 7 की जगह पे 35. So it means U is 5x and V is -6y. अब इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन स्केल. That is constant is multiplied or divided. अब चेंज इन स्केल से तो कोरिलेशन बदल जाता है. कैसे बदलता है अभी देखा हम लोगों ने. If u is equals to a plus bx and v is equals to c plus dy, then if b and d are of same sign, then rxy is equals to ruv. If b and d are of different signs, then rxy minus rxy is ruv. अब यहाँ पे u was 5x, so b was 5 and v was -6y, so d was -6. अब ये जो कांस्टेंट है ये 0 भी तो हो सकता है. अब इन दोनों के तो साइन अलग अलग है. इसका मतलब ruv is equals to minus rxy. That will be minus 0.93. है ना आंसर? Yes. 10th sum. The sum of squares of difference of rank given by two judges A and B of 8 student is 21. Sum of square of difference. Sum of square of difference is 21. You have to find the rank correlation. N is 8.
1 minus 6 into 21 upon 8 into 63. Now you can solve this. One minus 1 by 4, that is 1 minus 0.25, that is 0.75 is your answer. If the rank correlation coefficient between marks and management and group of students is 0.6 and sum of square of deviation differences is 66, what is the number of students? Now they have given you rank correlation is 0.6 and sum of square of differences is 66. So rank is 1 minus 6 summation d square upon n square minus 1. So 0.6 is equals to 1 minus 6 into 66 n into n square minus 1. So it is 6 into 66 upon n into n square minus 1 is equals to 0.4. Cross multiply n into n square minus 1 is equals to 66 into 6 upon 0.4. 66 into 6, 396 divided by 0.4. Your answer is 990. N into n square minus 1. Now either you will make it a cubic equation and solve it, or now in this stage you put the options. तो ऑप्शन क्या है 10 नहीं किधर गया वो 10 है 9 है 8 है 11 है तो मैंने पहले 10 डाला तो 10 क्या हो जाएगा 10 into 10 square minus 1 that is 99. Yes, it is 990. So your n is 10. 12th sum. While computing rank correlation coefficient between profit of investment for last 6 years of company, the difference of the rank for a year was taken 3 instead of 4. What is the rectified rank correlation coefficient if it is known that original rank correlation was 0.4? तो 6 साल का rank correlation आप निकाल रहे हो. Original was 0.4, n is 6, but one of the difference was taken as 3 instead of 4. तो ये गलत difference ले लिया आपने. तो इसको solve कैसे करते, correct कैसे निकालेंगे? 1 minus 6 summation d square upon n square minus 1. This will be 0.4 minus 1 minus 6 into summation d square तो पता नहीं है. n क्या है 6, 36 minus 1. Summation d square upon 35 is equals to 1 minus 0.4. Summation d square is 0.6 upon 35. Summation d square will be 0.6 into 35. That is 21. अब इस 21 में उन्होंने क्या किया है? The difference in rank d की वैल्यू जो 4 थी वो उन्होंने 3 ले ली है गलती से. तो मतलब इस समेशन d स्क्वायर में 3 का स्क्वायर ऐड है जिसको हमको माइनस करना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि समेशन d स्क्वायर तो डिफरेंस का स्क्वायर होता है ना. तो डिफरेंस एक्चुअली तो 4 था तो 4 16 ऐड होना चाहिए था लेकिन उन्होंने 3 ले लिया और 9 ऐड कर लिया. तो 9 को मैंने माइनस कर दिया और 16 को ऐड कर दिया. तो ये हो जाएगा 12 plus 16 that is 28. Now I'll put here in this formula. So R is equals to 1 minus 6 into 28 upon 6 into 35. This is cancel. It's 35 minus 28 upon 35. 7 by 35, 1 by 5. 1 by 5 is 0.2. So your new rank correlation coefficient is 0.2. B is your answer. For 10 pairs of observation, number of concurrent deviation was found to be 4. So they have given you C is equals to 4 and n is 10. And concurrent deviation is plus minus under root plus minus 2c minus n upon n. तो ये क्या होगा 2 into 4 minus 10 upon 10.
that is 8 minus 10 upon 10 minus 2 upon 10 that is minus 0.2 क्योंकि ये माइनस में है तो क्लब अंदर भी प्लस और माइनस आ जाएगा, that will be minus 0.2. B. Now the coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1 by root 3 if the number of concurrent deviation was found to be 6. मैम Then the value of p. Yes. मैम n इज इक्वल टू n माइनस 1 होता है ना कॉन्करेंट में, तो 9 Yes. आएगा ना, Yes. Yes. तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कि ए है? बी है मैम। ओके नहीं मैम 13th वाला। ओ लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है? फॉर 10 pairs of observation number of concurrent. Yes. 13. It was n was 10, so this n will be taken. Capital N was 10, so this n will be taken as 10 minus 1, that is 9. Sorry, I made a mistake here. तो ये 9 के साथ टेस्ट करना पड़ेगा आपको। So this will be 8 minus 9 by 9 minus 1 by 9. तो अंदर और बाहर आपको माइनस लेना पड़ेगा। Minus of minus 1 by 9, that will be minus under root 1 by 9. That will be minus 1 by root 3. Sorry, minus 1 by 3 is the answer, not root 3. Minus 1 by 3 is the answer. For sum number 13, D is your answer. क्योंकि 10 है ना, तो n minus 1 लेते हैं हम लोग। The coefficient of concurrent deviation for p pairs of observation was found to be 1 upon root 3. If the number of concurrent deviation was found to be 6, that is C is 6. C is 6 and number of pairs is, वही तो निकालना है, and R is 1 upon root 3. You have to find number of pairs. 1 by root 3 is equals to under root 2c minus n upon n. C की जगह पे 6 आ जाएगा. Squaring, it will be 1 by 3 is equals to 12 minus n upon n. So n is 36 minus 3n. ये उधर चला गया 4n is equals to 36. N is equals to 9. This is with concurrent deviation. So capital N will be n plus 1. 9 plus 1, your answer is 10. This is your answer. A. What is the value of correlation coefficient due to Pearson on the basis of the following data? अब X और Y का data आपको दिया है, you have to find correlation coefficient. 0 है. So C is your answer. अगर पूरा का पूरा न्यूमरेटर 0 आएगा तो आपका R 0 आएगा, लेकिन अगर कोई भी एक ही वैल्यू 0 आती है तो कंपलसरी नहीं है कि सब 0 आ जाए. Now next is, following are two normal equations obtained by deriving the regression lines of x, y on x. Okay. There is a printing mistake here. It had to be 5x plus 10y is equals to 40.
and 10x plus 25y is equals to 95. जिसका नया मॉड्यूल है प्लीज चेक करो ये सम. मैम ए सेम बी सम ही है दिया नए है। मॉड्यूल में. मैम ए और बी दिया है। नहीं वो तो ठीक है, ए और बी का कोई बात नहीं, लेकिन सम सेम सम है यस मैम। क्योंकि द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x उन्होंने कुछ और ही दिया है. सो ओके, सो द टू लाइन्स आर five x plus 10y is equals to 40. If I divide it by 5, I'll get x plus 2y is equals to 8. And the next line is 10a plus 25y is 95. So 10x plus 25y is 95. If I divide it by 5, I'll get 2x plus 5y is equals to 19. Now I have to find which is x on y, which is y on x, because we need to identify the regression line of y on x. तो इसका तो एक ही तरीका है, आप एज्यूम कर लो. मैंने अगर इसको y on x एज्यूम किया तो 2y will become minus x plus 8. Y will become minus 1 by 2x plus 8 by 2 will be 4. So byx will become minus 0.5. तो ये ऑटोमेटिकली x on y हो गई. तो ये होगी 2x is minus 5y plus 19. X is minus 5 by 2y plus 19 by 2. This is bxy minus 5 by 2. Minus 5 by 2 is minus 2.5. दोनों की साइन सेम है. यस. एक 1 से बड़ा है तो दूसरा छोटा है. यस. अब r निकालेंगे. r will be 0.5 into 2.5. 0.5 into 2.5 is 1.25 और इसका अंडर रूट आएगा 1.11. This is wrong. Your r cannot be 1.11. तो हमारा जो assumption है वो गलत है. तो ये y on x नहीं है, ये है x on y और ये हो जाएगा y on x. क्योंकि दो ही लाइंस दिए हैं, तो अगर ये y on x नहीं है तो ये y on x है. तो 2x plus 5y is equals to 19 is y on x. ये मेरे इसमें गलत है या आपके भी मॉड्यूल में यही आंसर्स दिए हैं? यही आंसर दिया है. तो 2x plus 5y is equals to 19. तो ये y on x है तो 5y will become minus 2x plus 19. y will become minus 2 by 5x plus 19 by 5. ये आएगा ना y on x का इक्वेशन. ये तो है ही नहीं 2x plus 5y. Okay, I'll see this. I'll see what is wrong here. कि अगर आंसर यही है तो एक बार चेक करना पड़ेगा. Let us do 17th one. If regression line of y on x and x and y are given, then the arithmetic mean of x and y is. See, if the regression lines are given, how to find out arithmetic mean? By solving the two equations simultaneously. So 2x plus 3y minus 1, 2x plus 3y minus 1 and 5x plus 6y minus 1. ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस है, इनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. I'll get 5x plus 6y is equals to minus 1 and this will be 4x plus 6y is minus 2. This is x 1. X is 1. If x is 1, then what is y? 2 into 1 plus 3 into y is minus 1.
2 plus 3y is minus 1. 3y is minus 3, y is minus 1. 1 and minus 1. 1 and minus 1. These are the two options. Given the regression equations 3x plus y is equals to 13, which of the one is equation of y? Now this you know very well. How to find the equation of, how to find whether it is y on x or x on y. If u is equals to x minus a by p and v is equals to y minus b by q, then BUV is Q by P BXY and BVU is P by Q BYX. Now in the given sum, they have given you U is equals to 2x plus 5. U is equals to 2x plus 5 and V is minus 3y minus 6. पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो ये x को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो मैंने अगर इधर न्यूमरेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया तो आई विल गेट x प्लस 5/2 अपॉन 1/2 and this can be written as minus of minus. So p is 1/2. If I divide by minus 3, v is y plus 2 upon minus 1/3. This plus 2 will be written as minus of minus 2. ये क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि हमको इसे इस फॉर्म में लेके आना था, x minus a upon p, y minus b upon p. p is 1/2, q is minus 1/3. Now they have asked you to find out regression coefficient of y on x is 2.4. What is the regression coefficient of u v on u? So as per the formula, regression coefficient of v on u is p by q b by x. So v on u is p. P is 1/2 upon minus 1/3 b by x. And here b by x is 2.4. They have already given you the value. This will become 3 minus 3/2 into 2.4. Now we'll solve this. 3 into 2.4. This is minus 3.6. Minus 3.6 is your answer. It's a very important formula. और ये वो फॉर्मूला है जो सिर्फ मॉड्यूल में दिया है और कहीं नहीं दिया है. Four y minus 5x is 15 is the regression line of y on x. 4y minus 5x is equals to 15. So 4y is 5x plus 15. y is equal, क्योंकि ये y on x है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ. y is equals to 5/4x plus 15/4. So byx हो गया 5/4. r xy क्या दिया है उन्होंने? 0.75.
तो बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे? आर एक्स वाई इज अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. That is under root 0.75 is under root 5 by 4 into bxy. 0.75 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.5625 is equals to 5 by 4 into bxy. So bxy will be 0.5625 into 4 upon 5. That is 0.45. A is your answer. ये प्रॉपर्टी है ना, R is equals to under root BYX into BXY. Y on X की इक्वेशन उन्होंने दी थी जिससे BYX मिल गया, R की वैल्यू उन्होंने दे दी है तो हम लोगों ने BXY निकाल लिया. Next 22. If regression line of Y on X and that of X on Y are given respectively, तो उन्होंने पहले दिया ये Y on X ये X on Y. Find the correlation between X and Y. अब ये अगर y on x and x and y है तो b y x तो वैसे भी -2 है और b x y हो जाएगा -1/8. तो r की वैल्यू होगी -2 into -1/8. That will be under root 2/8. That is 1/4. That is 1/2 plus or minus. अब ये तो माइनस ही होगा क्योंकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों माइनस है, तो ये -1/2 हो जाएगा या फिर -0.5. आंसर है यस. क्योंकि बी वाई एक्स बी एक्स वाई और आर सबकी साइन सेम होती है